Good morning to one and all. We extend a warm welcome to our distinguished resource person, Mr. Vikas Jain, all the faculty members present here, the and our enthusiastic participants to be part of this. On the behalf of IIC DDUC team, Ministry of Education, I welcome you all to this very interesting webinar on the topic World-Class Deep Tech Innovations. Moving on, I would like to introduce the ideals of IIC, the Innovation Institute Council. Our respected teacher convener of IIC Deen Dayal Upadhyay College chapter is Professor Ravindra Kaur Ma'am. The Ministry of Education, through its Innovation Cell, launched Institutions Innovation Council program for higher education institutions to systematically foster the culture of innovation and startup in the institutes. We have conducted several sessions on innovations and entrepreneurship in last months, and actually in last past year we have conducted so many sessions, so many successful sessions, and with that we have received an overwhelming feedback from the audience. And with this, we continuously strive to promote innovation environment in our college among these students. And and we really want you to please check out our social media handle to get some information about our upcoming events and the past events we have conducted. Moving on, I would like to welcome Mr. Vikas Jain, our speaker of the session. He's an award-winning motivational keynote speaker, the author of The World Class and two other books, an entrepreneur and a creator of Vikas World Class Portrait. It's a strategy that helps business to grow, and he helps many businesses to grow and flourish. Vikas has delivered almost 200 speeches for around 500 organizations like Yamaha, Intel, Dell. This is amazing. So we feel really fortunate to have you today as our mentor. Thank you so much Thank you. for being here with us. Now, I request Professor Ravindra Kaur Ma'am, the teacher convener of IIC DUC, to welcome our guest. Thank you, Dia. Thank you so much. A very warm welcome to our resource person of the day, Mr. Vikas Jain. And we're really privileged to have you here amongst us. I saw your profile and I was feeling so proud that you gave a consent on addressing our students. You being a person from a corporate world and giving webinars and helping organizations to grow. I'm sure this is going to be a very insightful, a motivational session for all our students where you would be telling them about world-class tech innovations. We're really looking forward to that. So a very warm welcome from IIC and the Department of Computer Science. This program is in collaboration with both the departments, with like the forum and the department. So I extend a warm welcome, and without much ado, I request you to start with your presentation. So the entire platform is yours. Thank you so much. Thank you very much. And good morning, everyone. And thanks for IIC for this invitation for me. And especially the Deen Dayal Upadhyay College for inviting me and giving me this opportunity to share the learnings which I have got through this journey to share with you all. So am I audible to all? Yes, you are audible. Yes. Is there any problem at the ICT part, or it's because you have some problem?
there's a problem at his end. He's just joining within 2 minutes. So let's wait for him. Yeah, am I audible now? There was some issue with the system. Yeah, you are audible. Okay, thanks. Give me a second. Let me just start my presentation. It's starting here. Just give me a second. So a quick check from the team on in the chat box. Is my screen visible to all? Yes, no, maybe you can type in. Yes, it's visible. Thank you. Thank you very much. And it's a great start. So it always happens when you are going to showcase a project and something happens. Same thing with me. So it's quite interesting. It's a good start for a session on world-class deep tech innovations. So what I'm going to share today is deep dive into each and every word कि जब हम बात करते हैं world class deep tech innovations की, तो what do we mean by it, or to make it industry relevant. And it's such a beautiful thing to see कि universities are taking this initiative to inculcate that culture of innovation within students, and that's why we are having this program. Now going forward, this is my quick brief, which is already shared, so 200 plus speeches. And when all these things happened, that I spoke to many organization, and even there are some international forum where I've spoken. So in last 2 years, when there was COVID and travel was not happening, again I talked to these many big organization, and my learning was that all these big organizations are actually looking for something different. They are looking for something else. And if we can inculcate that culture of innovation within us, that can be great. So what they are looking for and how we can inculcate that DNA within our students, and that can help them grow. So one of my talk on Josh Talk is having 3 million plus views. And it's so interesting because compared to any other university, when I visit and deliver my talk for Delhi University, it's always a special experience because I'm a product of Delhi University. So I did my graduation from Hansraj College in North Campus, and then I studied MCF again from Delhi University. So close to 6 years I was there in North Campus. So again, a very beautiful experience, I would say. But during that experience, there was certain other thing. When we talk about becoming world class, कि हमें सबसे best बनना है, what is world class? World class is being in the top 1% of your industry. मतलब define your industry, and when you are among the top 1%, you are world class. But
when I look at the students, especially at that age, there are some self-limiting beliefs. At least those were there with me. So I studied from a government school, and that too in Hindi medium. So there was always this phobia of going on stage. कि stage पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे. So when I was studying in MCA Delhi University, there is another university with the name Jamia Hamdard. There was some technical fest happening in that university, and we went there. And interestingly, that technical event got postponed, and at the same time, there was one cultural event that was happening, which was turncoat. So turncoat is a event where you are given a topic, you deliver in the favor of the topic and against the topic during that time. I initially decided I should not go there because there was this phobia that my English is not that fluent, I may fumble, what will happen? But later I decided that I should at least participate. हमेशा मेरे दिमाग में चलता है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा. I participated and I won that competition. I delivered my talk in Hindi. I asked the volunteers and organizers that is there any restriction that one has to deliver only in English, and the answer was no, there is no such criteria. You can deliver in language you are comfortable with. When I won that competition, it broke my mind, gave me a different insight that जिस कंपटीशन में मैं हार के डर से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था उसमें मैं फर्स्ट आया हूं. जिस कंपटीशन में हार के डर से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था उसमें मैं फर्स्ट आया हूं. तो आज तक मैंने कितनी अपनी लाइफ के ऐसे कंपटीशन मिस कर दिए होंगे जिसमें हो सकता है मैं फर्स्ट आ जाता, जो मैंने ही अपनी हार के डर से शायद फॉर्म अप्लाई नहीं किया. एंड सेम अप्लाइज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग दिस प्रोग्राम राइट नाउ. आज तक आई डोंट नो आपने कितने ऐसे एग्जाम मिस कर दिए होंगे, ऐसे कितने अपॉर्चुनिटी या कंपटीशन मिस कर दिए होंगे जस्ट बिकॉज थिंकिंग अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कि मेरा तो उसमें होगा नहीं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग. व्हाट डू यू थिंक? अभी आपको ये सुन के क्या लग रहा है? और यू थिंक नो यू हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल in your chat? Do you also think that we would have missed something? Yes, no, maybe? Yes, if you agree with me that yes, we would have missed some events, or agar no, if you think no, I have already participated in each and every event. I need your response. Yes, no, maybe. Students, I want to see your chat. I would request all the participants to please write in the chat box. Yes, a few times. Great. What about others? Probably they are missing this opportunity also. Actually, ma'am, it's a typical scenario that we need a push, we need a momentum. We are always Yes. looking for external push. And I think that's the most critical thing that is stopping us most of the time in our life. When Very there is a true. recruiter, they will always say these to the organizer that people are not responding. They are not quite active. So showing that eagerness to reply, showing that eagerness to communicate always helps. So some of responses share that yes, few times it has happened with them. So I'm that so gives me a happy you different started insight. with this note, because this is the problem we face nowadays so much. Motivating the students to come up with what they are thinking or even trying, just with the with the fear of not being able to succeed, they don't even start their journey. So Yes. this is very important. So I was just thinking, wow, Vikas has started at such a note which is really required by students, by all of us probably. Yes, yeah, thank you, ma'am, and thank for the such a coherence. So based on my experience, I think talked to at least 100 plus colleges already, and that's my common experience that, so guys, if you really want to take something out of this session, see, listening the big words will not change your life. There are very few people for whom life changed overnight. Like there are very few people. So if you think that by listening to a great talk title like this, world class deep tech innovation will change your life, very few people would do that. But there are many people for whom life changed because they took the small action. तो मैं अभी आपसे इस बात को नहीं कहूंगा कि आज रात को जाके एक वर्ल्ड क्लास इनोवेशन सोचो. मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, start responding to chat, start taking action. Show your eagerness to the person. I'm not saying just for this webinar, to any opportunity that you get. Show your eagerness that I am active, I am ready to hear, and I'm ready to take that challenge. So great. So moving forward,
talking about world class. So lately there has been a lot of focus. So right now we are having a program on innovation. Along with that, there is a lot of focus on world class delivery from India. So NASSCOM had this event, and event title was World Class from India. And what world class from India? How we can develop world class product from India? Now, let me ask you in the chat box, what do you think? As per you, what are some of the world class products from India? In the chat box, some innovation, especially in the recent 5 years, 5 to 10 years. What are the world class innovations from India? In the chat box. Anyone? Any idea? Any world class innovation from India that you are aware of? No innovation? Not getting the response? Even if you say I don't know, that is better than saying remaining blank. I don't know would be a better answer. The number 0. Oh, not a recent year innovation, I would say many hundreds years, but yes, that's one of the innovation. Lately, what is we just got a list of 100 unicorns. And then we have one recent, which is 101, which is concerned with EdTech only. Come on. Yes. Physics wala. Okay, so we have got one answer. Oh, what else? So when I'll show you the slide, you will say, okay, I was aware about I knew this, but you may not have realized. So I'm not just talking about the companies, the innovations. So many companies are using those innovations. What are those innovations? Come on. There are so many which we talk of every day. Ritesh Agarwal, have you heard about him? I think his screen has stopped for others. Oyo Rooms, Byju's. There are so many examples. Come on. I want to see more answers. अभी तक तो आप लोगों को गूगल करके बता देना चाहिए था. Swiggy, okay. Again, my apology. So it's quite interesting. Again, the system went down, and this is an interesting example. So considering a MacBook till the time of Steve Jobs, it was a common perception that it will not have any problem, but now it has started having problems. And just think from that perspective, that what is the impact of one person on the product quality of the product when we talk about world-class innovation. So definitely MacBook is one of the leading product in that category. So what has happened? So what is the role of that one person that till the time he was there, the quality was different, and now things have changed? Amazing thing. Just a minute, I'll again share my slide. I really thought we would have number of replies by that time. At least they could have Googled and found it. But yes. So what are the innovations?
No innovation. Nothing is happening. No, they had some answers with this wala Swiggy. No, they're saying Uber. These are companies. These are companies, yeah. What are the innovations? Think from innovations perspective. Just try to stretch your thinking. So is the slide visible now? Okay, so we talked about Goonj, Anshu Gupta, I think I'm missing the name, but I've met the guy. Yes, Goonj. So when we talk about deep tech innovation in the chat box, so my slide is visible to all, right? Yes, it's visible. Okay, thanks. Now, when we talk about world-class products and world-class innovation from India, there are two examples. UPI. The same innovation is used by so many companies, but that innovation has come from India. And even if you go to website, their NCPI website, you will find out that there are many other countries which are now using this innovation. It's a very subtle thing that we don't realize that, okay, just imagine who would have designed that we can have UPI payment in addition to other accounting, other mechanism that we used to have. Talking about QR code, it's a one of the biggest innovation of this century. Because of that, earlier when we used to have credit cards, so uska zyada हो नहीं पा रहा था. क्रेडिट कार्ड्स पे जब भी हम कंपनी से या सेलर से बात करते थे तो दे विल से कि 1-2% सर चार्ज लगेगा. एंड जनरली माइंडसेट ये होता है फिर क्यों देना, लेट्स ट्राई अदर मैकेनिज्म. अब क्रेडिट कार्ड was a successful innovation in other countries. Other countries were developed. वहां के लिए आपको एक मशीन चाहिए स्वाइप कार्ड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट कंसीडरिंग द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो इनोवेशन उतना यूजफुल नहीं हो पा रहा था on top of that charge of 2%. But when QR based payment came, just imagine how thing turned around. अब उसको बस एक प्रिंट लगाना है QR कोड का, तो एक छोटे से छोटे शॉप वाला, एक रेडी वाला अपने वहां एक QR कोड का बस प्रिंट लगा के रखता है, और जो डिवाइस है एक्चुअली जो चार्जिंग का कॉस्ट था या जो भी चीज था वो हमारे हाथ में है, हमारा मोबाइल फोन. तो हम अपने मोबाइल फोन से जाते हैं, QR कोड स्कैन करते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है. जस्ट इमेजिन इन दोज फ्यू सेकेंड्स व्हेन यू गो एंड मेक अ QR पेमेंट नेक्स्ट टाइम, जस्ट इमेजिन कितने लोगों ने वो इंटीग्रेशन एक साथ जोड़ा होगा जो वो QR कोड बेस्ड पेमेंट आ गया है. अगेन अ वर्ल्ड क्लास इनोवेशन. So we need to broaden our idea from just company. So companies are using those innovations, but let's think from deep tech innovations ki what has gone behind in developing those innovations. I would urge everyone to study them as a case study. Just think of that, search it, that how UPI came into existence, who was the designer, उनके जाके इंटरव्यू लो कि उन्होंने कैसे ये चीजें डिजाइन करी हैं. दैट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनसाइट एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया इज हैविंग राइट नाउ. तो अब ये चीजें बनती कैसे हैं? तो जब हमने डीप टेक कुछ इनोवेशंस की बात करी एंड गिविंग यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, देयर इज ऑलवेज अ वर्ल्ड क्लास मास्टरमाइंड बिहाइंड अ वर्ल्ड क्लास ब्रांड. राइट नाउ द मैकबुक crashed 2 times consecutively, right? Some issue, but the point here is that the innovation does not hold good unless it has a foundation of great quality. The innovation तब उसकी वैल्यू समझी जाती है जब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. क्वालिटी इज सो गुड दैट वी जस्ट डोंट सी इट. फॉर एग्जांपल, जब हम कई बार घूमने गए होते हैं तो वहां पे रोड साइड पे आपको बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं. अब इनोवेटिव प्रोडक्ट देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, 50 रुपीज में, 100 रुपीज में, पता नहीं छोटा सा फैन होगा, पता नहीं कैसी घड़ियां होंगी, सब बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं. इनोवेशन इज देयर बट क्वालिटी इज नॉट देयर. वी नो कि वो कुछ दिन तक चलेगा नहीं. तो अगर इनोवेशन विदाउट क्वालिटी हम देने जाते हैं, इट डजंट होल्ड ट्रू. बट इनोवेशन तब स्टैंड कर पाती है जब उसके नीचे क्वालिटी इतनी स्ट्रांग होती है
जो हमें इनविजिबल हो जाए। When we go to a 5-star होटल, उनकी इनोवेशन पे हमारा ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने जो क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है उनको एकदम रिड्यूस कर दिया। मतलब हम जो कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, डिलेज देखते हैं, वो वहां पे बहुत कम हो रहे होते हैं, तभी हम उनकी इनोवेशन को चेरिश कर पाते हैं, कंपेयर टू ए 2 to 3 स्टार होटल जहां पे जो बेसिक फंडामेंटल्स है उनको मीट करना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा होता है। तो दैट्स द रोल ऑफ इनोवेशन। तो जब मैंने इनोवेशन को देखा तो मैंने देखा कि इंडस्ट्री में देयर इज ए सेक्शन। नाउ लेट्स गेट इनटू द साइंस ऑफ वर्ल्ड क्लास। एक एक वर्ड को बहुत डीप डाइव करते हैं कि व्हाट इज दिस साइंस ऑफ वर्ल्ड क्लास। सो बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन आई वर्क विद IBM एंड मैकेफी। सो IBM वाज अ सर्विस कंपनी, तो IBM में प्रोडक्ट डिवीजन भी है, बस आई वाज वर्किंग इन अ सर्विस कंपनी एंड फिर देन आई मूव टू मैकेफी एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट आल्सो। नाउ ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन आई ऑब्जर्व दैट there is some pattern in the industry, and to easily understand, it's that itself is a 2 days workshop, but just to understand that pattern, what is that quadrant the industry is divided into. If you put innovation, expertise or quality depending on the context, let's talk about companies, the world class companies. Now world class companies are known for the kind of people that they hire, so let's put that expertise that they hire on the x-axis and their popularity on the y-axis. चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, क्वाड्रेंट 1 वो कंपनीज हुई जो वर्ल्ड बेस्ट टैलेंट हायर करती है और बहुत पॉपुलर है, तो आईटी स्पेस में कौन सी कंपनी होगी? इन द स्पेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, जब हम टेक की बात कर रहे हैं, आईटी स्पेस की कोई वर्ल्ड क्लास कंपनी का नाम बताओ, क्वाड्रेंट 1 कंपनी, ऐसी कंपनी जो हायर बेस्ट टैलेंट करती है एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट देम। एनीवन इन द चैट बॉक्स? Q1 कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको बहुत हाई टैलेंट हायर करती है और बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड में। एप्पल, yes, what else? Google, great. बाकी लोग? सिर्फ आज तक कोई पता है, मतलब बाकी लोगों को नहीं पता? Microsoft, yes. What else? Amazon, okay. और we are having 100+ participants. कम से कम 10-20 ऑप्शन तो बहुत क्विकली आ जाने चाहिए थे, राइट? सो नाउ वी नो कि हाँ, हमने कुछ कंपनीज के नाम आने लगे, फ्लिपकार्ट, टेस्ला, सो सम क्वाड्रेंट 1 कंपनीज। अब क्वाड्रेंट 2 कौन सी कंपनीज होती है जो टैलेंट बहुत डीप टेक हायर नहीं करते बट वो भी बहुत पॉपुलर है? तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको मास रिक्रूटर कहते हैं कि टैलेंट बहुत ज्यादा हायर किया जाता है, बट आई विल नॉट आस्क द नेम्स, बट वी नो कि देयर आर सम कंपनीज व्हिच फॉल्स इनटू दिस क्वाड्रेंट ऑफ Q2. Then comes the quadrant 3 companies. Quadrant 3 ऐसी कंपनी है ना तो वो बहुत डीप टैलेंट हायर कर पाते हैं और ना उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है मार्केट में, तो बहुत कम लोग जानते हैं। द गोल्ड पॉट इज क्वाड्रेंट 4. जब मैंने ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मेरे को मौका मिला, तो देयर वाज अ कंपनी विद द नेम सॉलिड कोर which was acquired by McAfee. So when I was working in McAfee, I was working with a team of like these people from Solid Core, and I found out that the people were at par or even better than people at Microsoft, I would say. मतलब उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मूविंग टू माइक्रोसॉफ्ट, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के उस टीम में आ जाएं। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडस्ट्री का एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत डीप एक्सपर्टीज हायर करता है but they are not popular. Clear? Yes, no? In the chat box. मतलब एक इंडस्ट्री का Q4 सेगमेंट है जो बहुत डीप टैलेंट हायर कर रहा है बट लोग जानते नहीं है। What is the reason behind this? Reason is that's how the market works. That's how our memory works. ज्यादातर इंडस्ट्री में अगर हम बोला जाए कि कितने एक्टर्स हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1000+ एक्टर्स काम कर रहे हैं, पर टॉप क्वाड्रेंट 1 एक्टर कौन है, मतलब जो अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है पर फेमस है? बहुत कम। बट क्या उसका मतलब ये है कि और टैलेंटेड एक्टर्स हैं नहीं? सेम वे, दैट्स हाउ द इंडस्ट्री इज। सो गुड क्वेश्चन सोनल। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, एज पार्ट ऑफ आवर अध्ययन कंसल्टेंसी वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू पीपल। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, रेंजिंग फ्रॉम 0 एक्सपीरियंस टू 15 ईयर एक्सपीरियंस। तो वहां पे हमने ये चीज देखी है कि जब लोग अगर क्वाड्रेंट 4 कंपनीज को अपनी इंडस्ट्री में ढूंढना, सो देयर इज दिस स्पेस, इट्स नॉट जस्ट कंपनी, देयर आर पीपल।
इसमें बहुत सारी चीज आ जाती है। तो अगर आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, इवन हो सकता है यहाँ पे जो 100+ पार्टिसिपेंट है, नॉट एवरीवन वुड बी इंटरेस्टेड इन टेक इंडस्ट्री। मैं कह रहा हूँ आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आप एमबीए करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, हर एक इंडस्ट्री में क्वाड्रेंट 4 सेगमेंट है। वो सेगमेंट है जो बहुत पॉपुलर नहीं है, बट वो बहुत एक्सपर्टीज उतनी एक्सपेक्ट करता है जितना गूगल एक्सपेक्ट करती होगी, जितना माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेक्ट करती होगी। अगर आप उस क्वाड्रेंट 4 के पास चले गए, पास चले जाना मतलब आपको उन कंपनीज के नाम पता चलने लग जाए, आप उन लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दें। अगर आपने वो करना शुरू कर दिया, यू विल गेट टू द डीएनए ऑफ वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस। आपको पता चलने लगेगा, आपको ऐसी वाइब्स आने लगेगी, अरे वाह ये इतना सीनियर होके भी ये चीज कर रहा है, अरे वाह ये वो कर रहा है। ये बहुत जरूरी है। तो फाइंड Q4 कंपनीज इन योर इंडस्ट्री। देयर आर ways, but it's a long discussion, I may not cover in that 1 hour seminar, but that world class quadrant, I have tried and tested it many times and it works like magic. There have been people, अभी एक recent एक person था जिसको 15 साल का करीब IT का एक्सपीरियंस था, because he was not aligned properly in the industry. तो उसका जो पैकेज था वो करीब 25 लाख के करीब का होगा, एनुअल पैकेज। He got in touch with us. Now his package is 70+. That too in a gap of within 6 months. अब क्या 6 months में उसका स्किल लेवल एकदम बदल गया, एटीट्यूड बदल गया? नहीं, he was having the right skill, he was having the right attitude, just that industry positioning was not correct. So we routed him through Q2 to Q4 to Q1. So that takes time. There are certain strategies, but I'm telling you, find out the Q4 quadrant in your industry. Now, अब ये क्वाड्रेंट तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, दैट्स अ इंडस्ट्री, दैट्स आउटसाइड। आप इंडस्ट्री को जान लिया, आपको पता चल गया ये 10 कंपनी के नाम है आपकी इंडस्ट्री में। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपको इंटरनल चेंज क्या लाना होगा। मतलब एक बहुत टैलेंटेड पर्सन का आपको तो नाम पता चल गया, बट वो टैलेंटेड पर्सन आप में क्यों इंटरेस्ट शो करेगा? तो आई आइडेंटिफाई सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स, जिसका एक्रोनिम इज VIKAS. द फर्स्ट स्किल इज विजन. सो पीपल विल आस्क कि आपकी विजन क्या है, व्हाट डू यू वांट टू गेट? तो कई लोग बोलेंगे एट दैट लेवल ऑफ कि बस मेरे को एक जॉब दिलवा दो सर। नाउ दैट्स नॉट अ वेरी इंस्पायरिंग विजन कि कोई बस ये आ रहा है को कोई भी जॉब दिलवा दो। सो व्हाट इज योर विजन कि मैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। आई इज इनोवेशन, मैंने ऑलरेडी कौन सी इनोवेशन शो करी है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप बस मेरे को हायर कर लो या आपके साथ मैं ज्वाइन कर लूंगा तब मैं बहुत कुछ कर लूंगा, विच मीन्स कि वी आर डिपेंडेंट। मतलब दैट पर्सन इज डिपेंडेंट जो बिना किसी की हेल्प के अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा। विद द एडवेंट ऑफ, अभी अगर आप ऑनलाइन सेशन से जुड़े हो, विच मीन्स यू हैव अ डिवाइस, यू हैव अ इंटरनेट। अगर इन दो चीज के बाद भी किसी तीसरी चीज पर डिपेंडेंसी बन रही है, समथिंग रॉन्ग। इनोवेशन, सो डोंट से कि आई विल शो इनोवेशन, शो योर इनोवेशन राइट अवे, डोंट टेल, शोकेस योर टैलेंट। केस फॉर नॉलेज, कितनी नॉलेज गेन करी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर मैं आपकी इंडस्ट्री से 1-on-1 डिस्कशन कर रहा हूँ, एक मॉक इंटरव्यू चल रहा हो विद वन ऑफ यू, और आपकी इंडस्ट्री से पूछ लूं कि क्वाड्रेंट 4 कौन सी कंपनीज है, क्या आप मेरे को 100 कंपनीज के नाम बता सकते हैं? इफ यू डोंट नो, नॉलेज नहीं है अपनी इंडस्ट्री की। देन कम्स द रोल ऑफ एटीट्यूड। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि एटीट्यूड बिकम्स अ फाउंडेशन। कि किस एटीट्यूड से काम हो रहा है। एटीट्यूड ये है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है। मतलब ये एटीट्यूड अगर हम लेके आगे बढ़ते रहेंगे, इससे कुछ सोल्यूशन तो निकलता नहीं है। दैट हैपेंड विद मी। मैं हंसराज कॉलेज में था एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर MCA, और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी हुई थी उस टाइम पे। अब मेरी रैंक बहुत खराब आई, जो एक मॉक टेस्ट हुआ उसमें मेरी रैंक बहुत खराब आई, तो मैंने 4 महीने के लिए एक लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। और विद इन दैट 4 months जब मैं उस लाइब्रेरी में गया, तो वहां से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो कॉन्सेप्ट थे, वो इतने स्ट्रांग हो गए कि जो मैं कंपटीशन सोच नहीं पा रहा था, जो रैंकिंग अच्छी नहीं थी, वो वहां पे क्लियर होने लग गए। और मैंने ये चीज को फिर दोबारा से सोचा कि जब हम टिपिकली बोल देते हैं कि मेरे साथ अच्छा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, या मेरा कॉलेज ये है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, बाहर के टीचर देखो, मतलब आई नो ऑल दिस डिस्कशन कम्स अप जब आप चाय पे बैठे होते हो, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो, यही डिस्कशन आते हैं। बट उन डिस्कशन से हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं? तो एटीट्यूड प्लेज द रोल कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। एंड देन कम्स द रोल ऑफ स्किल। स्किल इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि कई लोग बात करते हैं कि सर मेरा बहुत अच्छे MBA में नहीं हुआ, वरना तो मैं बहुत ये कर देता, मैं वो कर देता। एंड मेरा माय कॉमन क्वेश्चन टू देम इज, क्या आप अपने इंटरव्यूअर को ये बात
कन्विक्शन से बोल सकते हो कि सर आप एक MBA जो IIM से हो उससे प्रेजेंटेशन करवा लो, एक मेरे से प्रेजेंटेशन करवा लो, अगर मेरी प्रेजेंटेशन उससे बेटर हो तो हायर मी। कैन यू हैव दैट कन्विक्शन इन योर थ्रोट? क्या ये कन्विक्शन आ सकता है? इफ वी कैन गेट, और उसके लिए चाहिए क्या? क्या कोई बहुत पेटेंटेड वर्क है जो IIMs या IITs पढ़ा रहे हैं? IIT का पूरा सिलेबस विद वीडियोस NPTEL वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्या चाहिए हमें और? दैट स्किल। तो जब हम इस VIKAS को, जब आप इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम में जाएंगे, आपको कंपनीज का नाम पता चला पहले फ्रेमवर्क से, बट उस फ्रेमवर्क में सस्टेन करने के लिए आपको ये एटीट्यूड एंड स्किल शो करने पड़ेंगे, दैट इज VIKAS। और इन चीजों को वैलिडेट करने के लिए मैंने बहुत इंटरनेशनल लोगों को इंटरव्यू किया कि आर दे अलाइन विद दैट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स वर सेम। तो ट्रू कॉलर का जो फाउंडर है एलन मैमदी, इन लोगों से मेरे 1-on-1 डिस्कशन हुए और वहां से ये चीजें कंक्लूड करी कि कैसे हम Q4 क्वाड्रेंट पे फोकस करें और विकास फ्रेमवर्क पे बात काम करें। नाउ अब सुनने में लगाएगा कि सर ये वही फिर मोटिवेशनल टॉक वाली बात हो गई, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, 1 घंटे बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है। यस, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आई एग्री, इट्स नॉट इजी, इट्स कॉम्प्लेक्स। बट मैंने जब भी वर्ल्ड क्लास लोगों को स्टडी किया, इजी करके कोई वर्ल्ड क्लास नहीं बना है। दे बिकम वर्ल्ड क्लास बाय डूइंग द कॉम्प्लेक्स। जब हम एक शॉर्ट वीडियो किसी भी टैलेंट का देखते हैं, वो कुछ आसान नहीं कर रहा होता, दे आर डूइंग द कॉम्प्लेक्स। द मैजिक इज दे आर डूइंग द कॉम्प्लेक्स इजिली, एंड दैट मेक्स यू वर्ल्ड क्लास। दे आर डूइंग द कॉम्प्लेक्स। आपकी इंडस्ट्री का जो सबसे कॉम्प्लेक्स काम होगा, अगर आप उसको इजिली कर दोगे, यू विल बिकम वर्ल्ड क्लास। बट अगर जो सबसे सिंपल काम है उसमें हम स्ट्रगल करेंगे, तो हाउ विल वी बिकम वर्ल्ड क्लास? सबसे सिंपल काम, कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करना, उसमें हमारे पसीने छुड़ जाते हैं, उसमें लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। लगेगा क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, बट इट्स योर एटीट्यूड। मेरे को याद है, मैंने जब फिजिक्स का भी प्रोजेक्ट सबमिट करना था हंसराज कॉलेज में, कई बार फ्रेंड्स का आया जो मेरे साथ कि बाय कर लेते, क्या फर्क पड़ता है कौन इसको देख रहा है। मैंने अपने आप बनाया, शॉप पे गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट खरीदे कि जैसा भी होगा देखते हैं। एक घर पे एक बॉक्स पड़ा था, उसमें वो तारों को जोड़ा। डाउट हो रहा था कई बार कि टीचर मजाक तो नहीं उड़ा देंगे कि ये कैसा बॉक्स लेके आ गए, मतलब वो तार हिल जाती थी, उसको पकड़ के दिखाते थे, सर देखो अब एक्सपेरिमेंट चलेगा। बट रिवर्स हैपेंड, मतलब टीचर को मेरा वो जुगाड़ करा हुआ एक्सपेरिमेंट ज्यादा पसंद आया कंपेयर टू अनदर गर्ल जिसने एक खरीदा हुआ प्रोडक्ट दिखा दिया। उन्होंने कहा ये तो मार्केट से दिखा दिया, आपने इसमें क्या किया है? तो दैट स्मॉल एटीट्यूड ऑफ हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट्स विल टेक यू टू द वर्ल्ड क्लास लेवल। अगर हम सोचते हैं कि ठीक है एक्सपेरिमेंट से क्या फर्क पड़ता है, असाइनमेंट से क्या फर्क पड़ता है, एक दिन कोई बड़ी कंपनी हमको हायर कर लेगी और तब हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, सॉरी, सीम्स लाइक ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। कुछ लोगों के साथ हो सकता है हो जाए, बट अगर हमें उस Q4 वाले लोगों के साथ डील करना है, वो बहुत जल्दी आपका एटीट्यूड गेस कर लेंगे कि आपने ऑलरेडी क्या किया है। तो डूइंग द लेट्स गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ डूइंग द कॉम्प्लेक्स। इजी बहुत कर लिया लाइफ में। अब बात ये आ जाती है कई बार कि सर इन्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने एक लर्निंग मॉडल निकाला, एंड दैट लर्निंग मॉडल इज बेस्ड ऑन महाभारत में जो स्टोरीज हैं, AKEA मॉडल ऑफ लर्निंग। सो व्हाट इज AKEA मॉडल ऑफ लर्निंग? तो अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझा, फिर हमने ये समझा कि विकास फ्रेमवर्क कौन कौन से वो एटीट्यूड एंड स्किल हैं जो हमारे को अपने आप में चाहिए टू ग्रो टू दैट लेवल। अब उनको डेवलप कैसे करें, कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो देयर आर डिफरेंट मॉडल ऑफ लर्निंग। फर्स्ट मॉडल ऑफ लर्निंग इज अर्जुन। अब अर्जुन कौन है? आज की एज का मेरे को लगता है IIT IIM से पढ़ा हुआ स्टूडेंट इज अर्जुन काइंड ऑफ लर्नर। यू आर फ्रॉम अ गुड, यू आर हैविंग गुड स्किल, यू आर फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूशन, और सब कुछ बेस्ट मिलने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज अर्जुन वे ऑफ लर्निंग। बट interestingly that's not the only way of learning model. The other learning models is kern. अपने आप अपना मेंटर ढूंढ लो। अगर द्रोणाचार्य नहीं मिला तो अपना मेंटर अपने आप से ढूंढ लो, स्टडी अंडर देम एंड गेट दो स्किल्स। एंड देन कम्स एकलव्य, सेल्फ टॉट। अब ये कहेंगे सर ये बड़े थियोरेटिकल वर्ड साउंड कर रहे हैं। नोरा फतेही का सबने नाम सुना है, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे होगे, उसके अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे तो इट इज रिटन आई एम ए सेल्फ टॉट डांसर, सेल्फ टॉट डांसर। तो दैट एकलव्यइज्म इज प्लेइंग रोल। जब हम वो फेम देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि व्हाट हैज गॉन
inside that fame, and that is your self-taught behavior. और कई लोगों का अभिमन्यु होगा. अभिमन्यु इज इनबॉर्न टैलेंट. यू माइट बी गुड एट समथिंग. हो सकता है आपने बेस्ड ऑन जो भी हमारे डिसीजन रहे, आप किसी और कोर्स में या किसी और सब्जेक्ट को ज्वाइन कर लिया. हो सकता है आपका टैलेंट किसी और सब्जेक्ट में हो. व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व हियर, इन सब चीजों के बीच में देयर इज दिस रोल ऑफ एकलव्यइज्म. सो आई हैव कॉइन्ड दिस न्यू वर्ड एकलव्यइज्म. व्हाट इज एकलव्यइज्म? एक अर्जुन में भी देयर वाज दिस लेवल ऑफ एकलव्यइज्म. सेल्फ zeal to study, self zeal to learn new things. अगर हम ग्रास रूट लेवल पे एकलव्यइज्म इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, I think it's going to be difficult to develop world class talent and world class innovation. Talk to anybody. आप किसी पर्सन को उठा के देख लीजिए जिसने वर्ल्ड क्लास इनोवेशन बनाई होगी, उनके साथ 2 घंटे ये बात करिए कि वो सोचते कैसे, काम करते कैसे हैं, एंड यू विल फाइंड दैट DNA ऑफ एकलव्यइज्म इन देम. आपको उनकी बातों से पता चल जाएगा कि उनमें एकलव्यइज्म कैसे आया है. और ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं, आई हैव शोकेस दोज ईगरनेस टू लर्न जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं. तो when I wanted to learn कि ग्लोबल स्पीकिंग कैसे काम करती है, somebody recommended me a video how to be a global speaker. I watched that video. टिपिकली लोग करते हैं, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे. आई वेंट 1 step ahead. मैंने जो वीडियो वाला पर्सन थे, फ्रेडरिक हेरन, द पर्सन हु चैनल आई वाज वाचिंग, आई रोट हिम एन ईमेल दैट थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल वीडियो, आई लर्नड अ लॉट, हाउ कैन आई लर्न मोर फ्रॉम यू? ही रिप्लाइड, watch 2 other videos, which I did, and replied back, how can I learn more from you? He replied, read my blogs at professionalspeaking.com, which I did. In next 3 days, I read 108 blogs back to back and replied back. I made notes and replied back, how can I learn more from you? He said, we are having a conference in Singapore. Why don't you come over and attend that conference? Which I did. And that image is from the same conference, world class. When your mentor is telling you something, what are you doing? Are you committed? Are you taking actions? That action will make you world class. तो अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि can I see some, what is your one word learning so far in the chat box? So I'm expecting an action. In the chat box, 1 word, 2 word learning so far from this session in the chat box. It's taking time. Let's see 4 or 5 learnings before moving forward. Great. Thanks, Priyanshu, for your response. What else? Being proactive is the key word. Great. What else? Not having self-limiting thoughts, importance of skills. And you will see a pattern that there are few people who are responding to the chat. That's interesting. I'm saying till the time it's a big thing to change our attitude and the way we work. I know it's a typical behavior that there is a person delivering the talk, sounds good, let's not respond, it's okay. But the day we will start seeing the 100 responses in the chat, we will actually build the innovation culture. By just attending the webinars, we may not be able to. That's just an igniting point, but that ignition will work only once we are having the good engine. And that engine is your eagerness. The day you can consider it as a benchmark that in any webinar, if there are 100 plus 80% people responding to the chat box, we have built that culture of innovation. Otherwise, there will be only few people who will put those things into action. Others will remain watcher, and also will play the role of commenting that things are not happening. Innovation Council banane se bhi kuch nahi hota. They'll play that role because there are good odd people who are good at playing that role. But I want you to change, because उस रोल को प्ले करके आपकी लाइफ नहीं बदलेगी. आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप इस चीज में पार्टिसिपेट करने लगोगे and be more responsive on the chat. Moving forward, considering the time thing,
Just go and Google the Polgar experiment. ये जो लेफ्ट मोस्ट पर्सन है, that person was a chess player and he was an educator. He decided कि anybody could be world class. He made a different kind of, he wanted to do a different kind of experiment. So he said, मैं अपने बच्चों को अपने ढंग से पढ़ाना चाहता हूं, and लेडी जो इस बात से एग्री करेगी मैं उसी से शादी करूंगा. One lady agreed. 3 daughters हुई, and from the childhood उन्होंने उसको घर पे सिर्फ चेस खिलाया. All 3 of them are grandmaster in chess. ये इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री है कि one of the girl has delivered a TED talk. नेट जियो पर इस डॉक्यूमेंट्री पे हो चुका है. If you go and watch those videos of the Polgar experiment. And the thing was कि अगर एक पर्सन एक चीज को बहुत ज्यादा टाइम कर सकता है, by default that person become the world class in that thing. हमारा ज्यादा टाइम कहाँ जा रहा है? What is that one thing जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं? So to summarize, on the left top corner we just talked to about add here, Yes, to add here to this wonderful example, I think Serena Williams and both the sisters, yes but ma'am, they have the same story. Yes, the ma'am. father was bent upon to make them as lawn tennis players, and the entire life was dedicated right from their birth, even before their birth. yes ma'am. I mean even Tiger Woods is also having a similar story. Yeah, Oh. yeah. So there's one movie which is that I would like students to see about. It's about Serena and both the sisters, and it's really nice, very motivating. The same what you were talking about. yes ma'am, because what I'm talking about are the principles. They will not change. They are the fundamentals. So but sometimes pictures and it talks of 1,000 words, so it really has a great impact. Yes, so ma'am. even that movie is very impactful. Yes ma'am. So again we talked about few more examples. तो जब हम इन वर्ल्ड क्लास टैलेंट की बात करते हैं, तो जब हम वर्ल्ड क्लास टेक इनोवेशन की बात कर रहे हैं, डीप टेक इनोवेशन, व्हाट इज डीप टेक इनोवेशन? सो वी नीड टू हैव अ डीप टैलेंट टू डू दोज इनोवेशंस. अब ये डीप टैलेंट बनेगा कैसे? द पर्सन हु गेट इन्वॉल्वड इन दैट डीप थिंग, दैट सब्जेक्ट दैट दे आर स्टडीing. तो ऑन द टॉप, on the left hand side, you are seeing this industry quadrant, right? So I'm summarizing what I have discussed so far. So on the left top you have the industry division. So in every industry there is quadrant 4. लोग ड्रीम करते हैं कि वो quadrant 1 में डायरेक्ट चले जाएंगे. If many things align, quadrant 1, but quadrant 1 में कंपनीज किसी भी इंडस्ट्री में 10 से ज्यादा नहीं है. एक्चुअली quadrant 1 में 10 से ज्यादा कंपनी नहीं है, तो the hit rate becomes very low. But ऐसा नहीं है ना कि बस कॉलेज के बाद इमीडिएटली क्वाड्रेंट 1 नहीं मिला तो क्या. तो व्हाट माय प्रपोजल इज, गो फॉर क्वाड्रेंट 4. क्वाड्रेंट 4 ऐसा पर्सन, ऐसी सेट ऑफ कंपनीज हैं और ऐसा कल्चर है जो 1000 होंगे. हर इंडस्ट्री में कम से कम 1000 ऐसी कंपनी है जो क्वाड्रेंट 4 है, राइट? आप दूसरे ढंग से सोचो, क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जो लोगों ने आईटी के एग्जाम्पल दिए थे, क्या वो लोग जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में नहीं जा रहे क्या? मतलब देयर आर सम अदर कंपनीज जिसके हमें नाम नहीं पता, जहां पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल छोड़ के भी लोग जा रहे हैं. और वो किन कंपनीज में जा रहे हैं? दोज आर क्वाड्रेंट 4 कंपनीज. अगर आपका डायरेक्ट वैसी कंपनीज में रिक्रूटमेंट हो जाए तो उनके डायनेमिक्स अलग हैं. इट्स अ लॉन्ग वर्कशॉप कि उनके डायनेमिक्स क्या हैं, कैसे वो कंपनीज मिलती हैं. द पॉइंट इज, उसके लिए आपको एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, द पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसका विजन, विजिबिलिटी, इनोवेशन, नॉलेज, एटीट्यूड, एक्शन, स्किल अलग लेवल का होगा. तो द कीवर्ड इज एकलव्यism. स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इफ यू कैन शो योर बिहेवियर इन एकलव्यism, कि आपने कोई टीचर जो पढ़ा रहे थे वो एक चैप्टर अपने आप से पढ़ लिया, आपने कोई भी उन्होंने एक टास्क दिया आपने अपने आप से कर लिया, दैट विल शो योर एकलव्यism. इन अ वेरी स्मॉल वर्ड अगर मैं बात करूं तो, एक रेसिपी पढ़ के एक डिश बना पाना, एक अच्छी डिश बना पाना एक मास्टर शेफ का काम होता है. हर कोई एक रेसिपी पढ़ के डिश नहीं बना सकता. एक रेसिपी पढ़ के एक डिश बना पाना एक मास्टर शेफ का काम होता है. वैसे ही जो बुक्स में वो ब्यूटीफुल कंटेंट लिखा है,
उसको इम्प्लीमेंट करके एक इनोवेशन क्रिएट कर पाना एक एक्सपर्ट का काम है, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट का काम है। और जब आपने वो एकलव्यिज्म शो किया, योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। एंड वी नीड टू हैव दैट कल्चर कि जहां पे ये एकलव्यिज्म रखने वाले लोग साथ में मिलें। There is this role of environment, and that's why we are creating this Adhyan Center of Excellence. This is one of our dream project to create those Adhyan Center of Excellence. So probably Dwarka mode pe ho sakta hai, within few months we may have our own Adhyan Center of Excellence, which is nearby to DDU. And even there is a Telegram group which we have created, so people can take the screenshot if they want of this image and join the Telegram group, or probably coordinate. Just keep my number handy. I'll add you to that group. So there is a Telegram group which we have created जहां पे हम अध्ययन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि जो हम ये बात कर रहे हैं वो एक मोटिवेशन के साथ अगले दिन डाई डाउन ना हो जाए। वहां पे कल्चर हो जहां पे 100 लोग सिमिलर थॉट के आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं और डेली बेसिस पे ऐसे डिस्कशन हो रहे हैं। सो दिस रोल ऑफ अध्ययन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट। कई बार हम मोटिवेशन में कैसे पूछते हैं कि व्हेन यू आर ऑन डेथ बेड आप क्या देखना चाहोगे, मतलब क्या एक ऐसी चीज है जो आप करना चाहोगे। तो वन ऑफ माय डीपेस्ट मिशन इन लाइफ इज कि हर एरिया में ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएं। adhyancenter.com, I'm just typing in chat, has the blueprint I have created. I've done so for last close to 15 plus years. I'm doing research on this concept कि library और अध्ययन center में क्या फर्क हो सकता है। So that's all from my side. I'm open for last 4-5 minutes of question, and that goes my contact details. In case you have any query and would like me to answer your query, you can always go by this, and I'm also pasting my LinkedIn URL. So in case you have any query, you can tag me on LinkedIn or follow me and do great. So that's all from my side. Thanks to ICT team for inviting me, and ISC for this beautiful initiative, and DDU team for again coordinating this event. Thank you very much. Thank you so much. I have no words. I think I'm the first person who would say I have learned a lot from this. When we invited you and you said I would be talking about deep tech innovations, word tech innovations, what I had in mind was you would be talking about all different innovations which have taken place probably during last 5 years or during last 2 years. But the approach you have taken, starting from the ground reality, talking about your own self, from turning from a shy person in the college, coming from a school with a Hindi medium background, and then becoming a world-class leader and a speaker. That itself speaks volumes about you. And how you could do it, you have told in very simple words. It's all about taking a step ahead. Just leaving self-doubt and taking a step ahead, thinking whatever may happen, even if it's a failure, I'm going to learn something. But if I just stay latent, I don't do anything in fear of losing, I won't be gaining anything. So I think what I have learned from your entire talk is, again, implementation of whatever you feel you can do, and not just limited to the idea part only. This is where we think probably I can do it. Okay, I'll try it someday, and we keep on postponing things, but things don't come so easy, and they would only come when we take a step ahead. And you very beautifully, how you, within your name itself talks about development and growth. Thankfully, your name itself is Vikas, and how that you have used it as an acronym to tell how you can, understanding the industry, and the framework can be given by that Vikas. Look, hats off to you. I really like that concept, how you have used your own name to define the framework. And then from our Indian history, again, you have taken how you can define a model. That was again very interesting and very relatable. That starting from Arjun to Karan to Eklavya, and I think this is how you said, and it was really, really very interesting. And you have basically talked about motivating students right from their college days. Not only when they are recruited, but what is required, what temperament is required
to become to a world-class worker or an employee or a leader, a team worker or then a leader. And again, it was very fascinating to see how you related, how you told that whenever you have any doubt, you have to contact that person. And most of the times, the persons on the other end, they always reply back. Even this is what I have seen in the LinkedIn family. I have seen so much of support. I have seen people really helping you, empowering you. And in the process, both the parties get empowered. So you have given so much of food for thought to the students. I'm sure students, those of the students who have really listened carefully, gave attention to what you said, have a good food for thought. And they have the entire recipe now. Now that depends upon them. Do they use that recipe or not? So thank you so much. And I would now request the students to please, if they have any questions or comments, please write it in the chat box. As a participant, I had an excellent time. I really enjoyed the talk, and I would be looking forward to probably a part of your Adhyan mission. It seems so fascinating, and since it's going to be nearby our college campus, I would often visit that. And if I could be of any help, my services are there. Thank you, ma'am. Thanks for that. I really appreciate that. It's a big thing. Come on, students. Any comments, any queries? Let's take one step forward. So I usually stretch people to do something. So Abhi, I have shared my LinkedIn link to you. If I ask you to use this hashtag to ask some question over LinkedIn, so you need to use this hashtag so that I can track it on LinkedIn, World Class Vikas, and ask your question. So how many of you just thought yes, no, are having actually a active LinkedIn profile that you check? Because when we are getting into this system of innovations, we need to be active on LinkedIn, especially for the business side, jobs, corporate. So yes, no, how many of you are active? And can I see some question or comments? You're liking for the session, you didn't like the session, whatever is your feedback, with that comment or with the World Class Vikas, what was your learning? Can I see some chat box, chats on this, on the hashtag World Class Vikas? I know I'm stretching people, but that's the role of a mentor, to stretch people to think beyond what they are doing in the normal basis. Can I see some chat? Any one link? When you are done, if anybody is typing, they can say I'm typing here in the chat box. And once you are done, you can say there that I posted something. On your LinkedIn. What exactly is to be done, Vikas? Okay, so use this hashtag World Class Vikas, which I just pasted in the chat. Yeah. And type something. So it can be your question, it can be your comment about the session, it can be anything. If you on the LinkedIn. Okay, so we go on the LinkedIn. Yes. And we go to your so yes. So what you have to do is @Vikas Jain Live. So go to LinkedIn, go to your post, do @Vikas Jain Live, hashtag World Class Vikas, and your comment. So we have to go to our posts. Yes. Write a post. Yes. Okay, just a moment. I haven't done that, so I'm learning a new thing. People who have done it. See, I'm sharing one of the secret to be visible. See, in World Class quadrant, if as a professional, I want to increase my visibility, how should I increase my visibility? I'm telling you a secret. Don't just limit yourself to like.
For my Just a post, moment, Vikas. If I say write a post, then what do I do? okay, I'll just show you with my screen. So @Vikas Jain live, hashtag world class Vikas. This is what we have yes, to do. yes. So for example, if I just go to my profile, if I share, okay, right now I am sharing my screen and this is my screen, but if I would have pasted for me, so Vikajan live @hashtag world class Vikas, and had a pleasure delivering the session today. If I just post this thing here, so if somebody is searching for just hashtag world class Vikas, they will see this post, hashtag world class Vikas. So just go there and post something. So hashtag world class Vikas will have more posts. So I was telling you the secret to increase your visibility. So people usually tend to like something, but from the creator perspective, because there are 50 plus likes, they don't know who have liked your post, but they always see the comments. तो अगर आपको किसी पर्सन से अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट सीइंग यू और दैट पर्सन स्टार्ट सीइंग यू, ट्राई टू डू द कमेंट्स, राइट द कमेंट्स, एंड जितना अच्छा कमेंट होगा उतनी रेफरेंस ज्यादा रहती है, दिमाग में रहता है कि अच्छा ये पर्सन मेरी पोस्ट पे हमेशा कोई कमेंट कर रहा है, तो दैट बिल्ड्स द कनेक्शन. तो जब हम बात करते हैं ना कि मेंटर कैसे मिलते हैं, इट्स नॉट ए ओवरनाइट जॉब की एक से बोला और कि हाँ वो आपका मेंटर बन गया. इट टेक्स टाइम. हो सकता है मेंटर्स अपना टाइम लेंगे. तो व्हेन यू फॉलो देयर पोस्ट, डू दैट चैट, it helps them. So far I'm Vikas, have you received mine? I just want to like how the other person checks it. How does it go? so far, Because it says post successful. okay, here it's so far not visible with that hashtag. Let me check here also. World class Vikas was the hashtag, no? Yeah, but there was hashtag must have been written there, right? Exactly, world class Vikas. Okay, anyways, ma'am, I'll get in touch with you one and I'll let you know. So just for the information of the other, this just being on LinkedIn will not help unless you start participating on LinkedIn, and just be active. Try to type in comments, tag people. There are these beautiful ways to attach to somebody using. So not just simply type the comment, smartly type the comment, and you will create your visibility for that. And so again, thanks, ma'am. Thanks to the organization for inviting me. Thank and you I so wish much, all the best Vikas. to the students. It's our pleasure. Really had an awesome time. I can say for myself, and I'm sure all those, I'm repeatedly saying, all those who listen to you have had a good food for thought and so many tips to improve themselves and to achieve their aims and goals. They have the menu, they have the recipe ready. Now they have to see whether they try it or not. Thank you so much. Thanks to all the participants. So hoping to see you now for a physical session at our college. And thanks a lot once again to all the participants, to all my colleagues, and to our resource person, Mr. Vikas Jain. So that's all for the day. Have a blissful day, all of you. God bless you all. Thank you so much. And yes, a very heartfelt gratitude to the persons from ICT, Sudhakar ji, Rajkumar ji, Sandeep ji, for always being so cooperative. Thank you so much.